नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं हमारे फेवरेट पप्पू की। आप जानते हैं हमारा फेवरेट पप्पू बदल चुका है और उस बदले हुए फेवरेट पप्पू की हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं बहुत दिनों बाद रुचिर शर्मा और साथ में आपके जाने पहचाने विभूति झा जी। रुचिर, you'll understand Hindi if may not be able to हाँ speak. बिल्कुल, नहीं हम बोलते भी हैं। अच्छा, बोलते भी हैं आप। हाँ जी। तो प्लीज डिस्क्राइब योर फेवरेट पप्पू in one sentence. In one sentence, Justin Trudeau, over the past 8 years in which he's been in power, has consistently embarrassed himself by promising one thing or saying one thing to one constituency and then acting completely the opposite. He says that he wants Canada to have a feminist foreign policy and center LGBT rights, and then does a record arms sales agreement to Saudi Arabia. He declares a climate emergency for the Canadian federal government. The very next day, he approves a pipeline running gas that's been fracked in Alberta and oil that's been extracted in Alberta to British Columbia. He says, I support, Canada will support the right of people for peaceful protest all around the world. Oh, that's more than one sentence. If I use semicolons, that's all one sentence. विभूति जी, अब आप बताएं हमारे फेवरेट पाकिस्तानी पप्पू के बारे में आपका क्या विचार है एक वाक्य में। भारत को इस डोज की जरूरत थी और अब जो है इससे पूरा भारत परिवर्तित हो रहा है। थैंक यू ट्रूडो। तो भारत ने जो ट्रूडो को बैंग 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 जो ट्रीटमेंट दिया है उसके बारे में क्या कहना है आपका? ये तो जो जयशंकर जी ने कहा, आज हम हिंदी, अंग्रेजी या इंग्लिश तीनों में बोल रहे हैं क्या? हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश तीनों में बोल सकते हैं। अच्छा, बहुत आपको मैंने हिंदी के लिए चुना है वैसे। तो जिस तरह से जयशंकर जी ने काफी साहब जब वो बने थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा था कि आप हमारा अब जो है मस्कुलर अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी देखेंगे। तो ये जो है जयशंकर जी का जो निरंतर मस्कुलर रिस्पॉन्स रहा है ग्लोबल चैलेंजेस के लिए, ये उसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। यहाँ तक कि उन्होंने कनाडा को ये भी कहा है कि आपको अपनी एम्बेसी स्ट्रेंथ कम करनी चाहिए। यहाँ तक कि कहते हैं कि कनाडा में कनाडा तो अब दूसरा पाकिस्तान है, तो कहते हैं कि जो मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान, राहुल गांधी, ट्रूडो, आपके जो फेवरेट वर्ड है ट्रूडो, हाँ, तो तीनों एक कजन लगते हैं अभी तो। थर्ड कॉल्ड टर्डो। तो ये तो बिल्कुल चचेरे भाई लगते हैं, मौसेरे भाई लगते हैं, क्या लगते हैं पता नहीं, और कोई शक नहीं उनको चला रहा है साथ साथ। तो एक बात और भी है संजय जी, हमने पहले भी आपके साथ चर्चा की थी कि ये टूल किट जो है इसके बहुत सारे मुद्दे हैं। तो ये जो वॉर रूम में जब जनरल बैठता है ना, तो सारे के सारे प्यादे पौधे सब जो है लगे रहते हैं, उसको किसको कब एक्टिवेट करना है, यही मूल मुद्दा है। 2024 बहुत ही बड़ा इलेक्शन है भारत के लिए, और मोदी जी ही जो हैं वो टिके हुए हैं, अड़े हुए हैं, भिड़े हुए हैं कि हम तुम्हें भारत को बदनाम करने नहीं देंगे। तो एक जो है सिलसिला खड़ा हुआ है। तो ये जो पूरा जो कौम है लेफ्टिस्ट का, इस्लामिस्ट का, एलिटिस्ट का, जो जिसके बारे में कहते हैं कि अनहोली अलायंस जो है, वो उनको हटाने पे लगा है, क्योंकि उनको रेजिम चेंज के शौक है अमेरिका को बहुत ज्यादा, वेस्ट को। और तो उस रेजिम चेंज में वो बहुत प्रयास कर रहे हैं। उतना इन लोगों ने मान लिया है कि मोदी को शायद मोदी ही आएंगे, उनके साथ रहना है, जीना है, खेलना है, लड़ना है, लेकिन कोशिश करते रहो शायद कि पप्पू ना आ जाए वापस, पप्पू को ले आए तो एक कंप्लायंट बंदा रहेगा। तो ये जो है एक सिलसिला जो है टूल किट का नया रूप देख रहे हैं आप। देखिए सोचने वाली बात है कि एरिक गार्सेटी, अमेरिकन एम्बेसडर, ने भी बोल दिया कि भारत को कनाडा के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। अरे भैया, कनाडा में भारतीयों को खतरा दिया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है कि भारतीय भागो, और उसके बावजूद भी
अगर ये कह रहे हैं लोग कि इंडिया को कोलैबोरेट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन में, तो मैं तो कहूंगा कि भाई इंडिया के साथ आप कोलैबोरेट करिए, फाइंडिंग आउट खालिस्तानियों को जो कि इतनी नालायकी कर रहे हैं, वहां पे सारे सिख कौम को बदनाम कर रहे हैं वो लोग। तो इस चीज को जो है मैं समझता हूं कि ये टूल किट का ऑपरेशन का नया अध्याय चालू हुआ है, जो कि विफल हो जाएगा, मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि भारत अभी अड़ा हुआ है। भारत की अपनी शक्ति है, उस शक्ति को वो दिखा रहे हैं, और हमें आपको इस बात की बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए। मैं इसमें एक और बात ऐड करूंगा कि भारतीय और हिंदुओं के लिए, दोनों के लिए, भारतीय और हिंदुओं के लिए ये JFK मोमेंट आ गया है। JFK के 2 कोट्स जो मुझे बहुत पसंद आते हैं, कि उन्होंने पूछा था ना अमेरिकन्स को कि डोंट आस्क व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, बट व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। दैट मोमेंट अप्लाइज टू ऑल द स्लीपिंग हिंदूज और द मायोपिक हिंदूज की बैठे हैं शतरंज के खिलाड़ी और लोटस ईटर बन के, कि हमें कुछ नहीं होगा, देख लेंगे, देखते हैं, रह जाएगा, हो जाएगा, जो भी है। उस मेंटालिटी से हमें बाहर निकलना है, क्योंकि दुनिया भर में ये हमारे खिलाफ कर रहे हैं, इस बात को मानने के लिए। और दूसरा है, जब JFK का वही डायलॉग कोट जो उन्होंने कहा था कि हम वी आर गोइंग ऑन द मून नॉट बिकॉज इजी टू डू सो बट बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू डू सो, इस कोट को हमें अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा कि ये युद्ध जो होगा, इसका जो रिस्पॉन्स देना है, हमें देना है इसलिए कि ये कठिन काम है, क्योंकि हम बहुत दिनों से इसके लिए तत्पर रहे हैं, नहीं रहे हैं, तैयार नहीं रहे हैं। उसके लिए हमें तत्पर और तैयार दोनों ही होना पड़ेगा। तो इस बात को मानते हुए ये जो है, भारतीयों को अब उठना पड़ेगा। हम आप तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं उनसे भी ये अनुरोध है कि अपने आप को, जो सरकार का जो शब्द होता है, अपने आप को कार्यान्वित करिए। ये बहुत ही निहायत जरूरी है कि भारतीय जागें, असर्ट करें और एक्ट करें। ये सब चीजों की बहुत ही आवश्यकता हो गई है, नहीं तो हमारा जो, हमें वो निर्मूल करना चाहते हैं, और बाय कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, डिफीटिंग हिंदूज। एंड इस बात पे एक लास्ट टिप्पणी करूंगा कि हर भारतीय को ये सवाल पूछना है कि जो अपोजिशन है महागठबंधन का, जो गठबंधन का, ठगबंधन का, जो भी है, इंडी अलायंस जो कहते हैं, उन्होंने जानबूझ करके सारे भारत में एंटी हिंदू सारा काम किया हुआ है। तो वो कौन से हिंदू हैं जो इस बात को देखते नहीं है और समझते नहीं है कि आखिरकार तुम जो भी करोगे हिंदुओं के खिलाफ जाओगे, लेकिन तुम फिर भी काफिर ही बने रहोगे। ये याद रखना चाहिए सबों को। तो इट्स अ वेरी सीरियस इंपॉर्टेंट मैटर, और हमें अपने आप को बिल्कुल सजग करना पड़ेगा, बिकॉज इंडिविजुअली टारगेट हो रहे हैं ना, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष पे वो प्रहार करेंगे, एक नूपुर शर्मा बनाएंगे, और बाकी सब हम डर के मारे भाग जाएंगे, वो कहते हैं त्रस्त होकर के या सदमे में। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हमें जो है हमारी सामूहिक जो शक्ति है, उस सामूहिक शक्ति को हमें बिल्कुल सामने लाना होगा। जी, आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया याद रखें हमारे दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 जो कि 4 और 5 नवंबर को है, और विभूति झा भी वहां पर सशरीर उपस्थित रहेंगे। राइट। और हमारा क्राउड फंडिंग चल रहा है जो अभी केवल 17% पूर्ण हुआ है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया जाकर नीचे लिंक क्लिक करके हमें क्राउड फंड सपोर्ट करें। जिनको रजिस्ट्रेशन कराना है वो रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। साथ में सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मैं थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी दे देता हूं कि किस तरह से टर्डो साहब का कार्यक्रम हो रहा है। टर्डो साहब जो हैं वो 2015 में पहले इलेक्ट हुए थे, उसके बाद से 2019 में, वहाँ 4 साल का टर्म होता है, 2019 में इलेक्शन हुआ था, 2021 में मिड टर्म हुआ था। तो अभी अगला इलेक्शन वैसे 2025 में ड्यू है। 2018 में वो भारत आए थे, और जब वो भारत आए थे तो अपने साथ कुछ टेररिस्ट को भी ले आए थे और उसके बड़ा हंगामा हुआ था। अमरिंदर सिंह जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उनसे मिलने से मना कर दिया था, तो फिर बड़ी मुश्किल से उनको राजी किया गया। उसके लिए जो उनके साथ बहुत सारे लोग इस तरह के
ड्यूबियस बैकग्राउंड के आए थे उनको वापस भेजा गया, और उस बार भी मोदी जी ने उनको काफी खरी खरी सुनाई थी। लेकिन वापस जाने के बाद भी उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया अपनी नीतियों में, उसी प्रकार से प्रश्रय देते रहे खालिस्तानियों को। बाद में 2020 में कनाडा से फंडिंग हुई किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन के सहानुभूति में वहां से बैठे बैठे हमारे श्री टर्डो जी थे, वो बोलते रहे। और उसके बाद फिर आपने देखा कि हरजीत सिंह निज्जर को की हत्या हुई और हत्या के बाद में कई लोगों ने मजे लेने के लिए, जिसमें हम लोग भी मजे ले रहे थे कि भाई रा की साजिश है, रा की साजिश है, इट वाज जस्ट टंग इन चीक, और उसको हमारे टर्डो जी ने सीरियसली ले लिया। साथ में उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट और यूएस भी शामिल कर लिया। और उसके बाद फिर जब वो बीच में G20 में यहाँ आए, मोदी जी ने सुनते हैं उनको बिल्कुल ड्रेसिंग डाउन दे दी जैसे बच्चों को देते हैं। तो उसके बाद वो इतने परटर्ब्ड हो गए, इतने कष्ट में आ गए कि उन्होंने जाके कहा कि ट्रेड टॉक पॉज, मतलब जिसको कहते हैं कि स्वयं आत्महत्या करने वाला काम। वैसे भी भारत को कोई इंटरेस्ट था नहीं उनमें, ट्रेड टॉक में, कनाडा से कम से कम। और जहाँ तक बताया जाता है कि यूएस भी नहीं चाहता था कि कनाडा और यूके के एफटीएस फाइनलाइज हों। इस पे अभी हम बात करेंगे डीप स्टेट के बारे में बात करेंगे रुचिर से। तो और अब जो टिट फॉर टैट एक्शंस हुए हैं उसमें भारत ने इतना स्ट्रांग रिएक्शन दिया है कि कनाडा की, अब क्या कहें उसको, वो शब्द हम उपयोग में लाना नहीं चाहते, लेकिन फ्लावर हो गई है, ऐसा कह सकते हैं। तो अब चलते हैं रुचिर के पास। रुचिर, ये डीप स्टेट की बात कर रहे थे, लेकिन आपको लग नहीं रहा कि ये जो ट्रूडो का जो एक्शन है और उनको सपोर्ट नहीं मिल रही है बाकी लोगों से, तो डीप स्टेट में भी दो फाड़ हो गया है, देयर इज़ अ स्किज्म विद इन द डीप स्टेट, और सोरोस वर्सेस द रियल डीप पॉकेट्स जो हैं उनमें कुछ अलग अलग है। हम देख रहे हैं कि ब्लैक रॉक और वैंगार्ड जो है दे आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू सॉफ्ट पेडल मोदी जी। आपको क्या लग रहा है कि ये जो हो रहा है ट्रूडो को या टर्डो के साथ में, इसमें डीप स्टेट में भी दो डिवीज़न हैं, स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन तो हमेशा से लड़ते रहे हैं, आप जानते हैं। I would say that it's unclear if Canada has a deep state. It's an extension or accessory of the US, like most of the Five Eyes countries. But within the US, yes, there's definitely two factions. One which is the Biden faction, which wants to cultivate, if not closer relations, but at least comfortable relations with India, with a view to balancing their geopolitical interests in Asia, especially related to China and their concerns around Taiwan. On the other hand, within the State Department, there are those who are more ideological, less pragmatic, often aligned with interesting lobbyists such as the Soros Network or the Muslim Brotherhood's network in the Anglosphere, who feel that that Modi and by extension India needs to be kept at an arm's length away from the West and its ecosystem of support and allies and strategic partners. One thing that was interesting to mention, you went through this chronology. 2 months ago, there was a report that was released by the Canadian government through intelligence inputs, where they talked about foreign influence in Canadian politics. Now, for quite some time, there had been controversies about Chinese influence on Canadian state institutions, on Canadian research institutions, universities, and also on the Liberal Party to which Trudeau belongs. In order to deflect from these allegations and accusations, which do seem to have some merit, the Canadian government released a report where instead they blamed 3 other countries. They blamed Russia, Iran, and most surprisingly, India.
Now, usually India is not a country that is talked of in the same breath as Russia or Iran. I would be very proud if it was, but in this case, it was not really justified. Even people in India were laughing that we don't have that capacity, and most importantly, we don't have that willpower. Even if we had the capacity to act like Iran or like Russia, it's quite well documented that the Indian state and its policy-making apparatus believe in this Gandhian moral high ground. They don't take actions against enemies. They don't even want to name their enemies and try their best to get along with everyone unless very strongly provoked. And so this blew over. I didn't see any official reaction beyond the usual press release by the Ministry of External Affairs. And this was soon forgotten. We all had a good laugh when it happened. But now you see that the Canadians actually believe what they published, and they think that that India is at the level, operating at the level of Iran or Russia. And of these three, they've chosen to highlight India, which is quite interesting in the backdrop of the G20 meeting and Trudeau's repeated humiliations there. So the schism in the deep state is seen in the last few days, where Canada proclaimed this publicly, that they believe that the Indian government is involved in the death of a petty community activist, to use that term, based in Surrey, British Columbia, which until that point, it's been 3 or 4 months since that happened. If they had seriously felt that this was the case, they would have brought it up a lot earlier. At the time, it was seen as a internal internecine gang murder. And in the last few days, since he made this proclamation, he's tried to get the other Five Eyes on board, and they have not explicitly come out in support. They've just said generic things like, "Oh, it's bad that happened. Well, yes. Let's find a nice solution. Everyone should cooperate, investigate." So that is interesting, because then that starts to show you that at least in the minds of Washington, D.C., India is more important than some low-level drug peddler or propagandist or Interpol wanted separatist and terrorist. As many monikers one can use for these mysterious men. Okay. What about that schism that I talked about? So the schism being that at the moment in the US at least, the real deep state are those deep corporations, and Soros is a fringe of that deep state. But Soros seems to be working at cross purposes with them right now. Well, I think the corporations are busy trying to salvage what they can in Ukraine. That's why BlackRock is meeting with Zelensky this week, and doing their best to make as much money during the rushed privatizations that they'll do before they have to end the war and end the state of emergency. In case of India, I think for now better sense has prevailed in the US, and they have refrained from being too aggressive around this topic, but that can change, and that's indicated by the second half of so the other side of the schism. If you look at the Western media, if you look at the English-speaking media especially, they have swallowed all of Canada's points wholesale. They do not challenge them. They use the same terminology that Canada wishes them to use. They don't use separatists. They don't use terrorists. They use community activists. They use Sikh leader. They also refuse to platform Indian voices who try to push the Indian narrative. And it's good that the Ministry of External Affairs today ran a very extensive press conference. I believe Arindamji took 25 questions in a row about Canada. But again, there has been... But he was taking them all together. Yeah, yes.
It took so long to do it that then it comes off. His answers were very good, but it comes off as passive and defensive. They should have been on the front foot and setting the narrative from the start. Now, of course, it was good for domestic consumption. Indian citizens already knew that it's very unlikely that India did this itself, and yeah, that was validating. But it's not going to change anyone's mind in the West, not in the media, which is in the Soros and Muslim Brotherhood network, and not in the policy-making units of these countries. Hey, विभूति जी, आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि, और उससे पहले दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया आप अपने प्रश्न पूछें अवश्य, और व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं और आप सुपर चैट से पूछ सकते हैं। यस, जरूर पूछिए। इसमें एक और भी बात है कि जैसे स्किज्म की बात है, कुछ साल पहले तक इंडिया जो था रशिया से वेपन्स खरीदता था, डिफेंस इक्विपमेंट्स। अब जो है रशिया को के साथ जो भी कर रहे हैं, अब इंडिया ने अमेरिका से भी बहुत डिफेंस डिपार्टमेंट से इंपोर्ट करने लगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बातें चल रही हैं, तो डिफेंस परचेजेस बहुत बढ़ गए हैं इंडिया के। और पेंटागन एंड द डिफेंस डिपार्टमेंट ये देखती है कि इंडिया बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा क्लाइंट स्टेट बन सकता है अमेरिकन वेपनरी के लिए। तो उनको एक बहुत ही उनका विचार बदल गया है कि इंडिया एक क्लाइंट स्टेट बन सकता है, बिग बायर। स्टेट डिपार्टमेंट के रुख नहीं बदले हैं। जो पहले ये दोनों डिफेंस डिपार्टमेंट और स्टेट डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ इंडिया को देखते नहीं थे इंपॉर्टेंस के साथ, क्योंकि ये रशियन एलाई था, सोशलिस्ट था, ब्यूरोक्रेसी एंड ऑल दैट थिंग दैट वाज बैड वाज काउंटेड देयर। अब क्या हो गया है कि अब इंडिया में जो चेंज हुए हैं उसको मानते हुए पेंटागन इज ऑल फॉर इंडिया। पेंटागन चाहता है कि हम इंडिया के साथ ऐसा संबंध रखें कि हमारे डिफेंस प्रोडक्शन, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री वहां काम करती रहे। स्टेट डिपार्टमेंट जो उंगल लगाता है, जो बेवकूफ़ी करता है अपने एम्बेसडर के थ्रू या उनके पप्पुओं के साथ, इस बात का डिवीजन हो गया है यहाँ पे। इस बात का यहाँ पे अमेरिका में रियलाइजेशन आ गया है कि हम इंडिया को सीरियसली हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये गड़बड़ है मामला कुछ। हाँ, यहाँ पे अब ऐसा हो गया कि आपने देखा होगा कि जब रशिया के साथ G20 में भी ये दिखा था। यस, G20 में भी ये दिखा था कि उन लोगों ने इस बात को मान लिया है कि भारत की जो मित्रता है रशिया के साथ, उसको हमें अलग से देखना पड़ेगा। तो इन सब चीजों का जो है भारत ने, आई थिंक जयशंकर जी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो ग्लोबल अलायंस क्रिएट किया है, परसेप्शन इंडिया का चेंज किया है, वो इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है और अमेरिका इस बात को देखता है। आज अमेरिका के साथ क्या हो गया है कि जो चीन के साथ जो रोमांस चला इतने सालों तक, वो रोमांस भी अब खत्म हो गया है। चीन ही सबसे बड़ा दुश्मन नजर आ गया है सामने, और चीन के साथ अगर आपको संभालना है चीन को, मैं युद्ध की बात नहीं करूंगा, बट चीन को एज ए जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेटिक में अगर आपको न्यूट्रलाइज करना है तो एक ही कंट्री है जो कर सकता है, वो है इंडिया। और चीन इस बात से डरता है। मैं आपको एक चर्चा बताता हूँ, येल यूनिवर्सिटी में यहाँ हुई थी करीबन 10-12 साल पहले, और उसमें टॉम फ्रीडमैन ने कहा था इस बात को। वहां पे श्रीमान रामचंद्र गुहा भी थे। तो उस समारोह में टॉम फ्रीडमैन made a very interesting statement, and to near about quoting him, he said, China fears India because India will survive all the oddities, chaos, because it's a democracy. We know that. It has a rule of law. It will survive all the chaos that exists, and they will jump over the bumps that they face along the line. China is running at a very rapid pace. At some point in time, they will hit a bump. And like a fast car running a bump, anything can happen to it. And that's something which is very important. जो US State Department मानने लगा इस बात को कि जैसे मैं कहता हूं कि छोड़िए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी की चर्चा मत करिए, दोनों ही बहुत ही प्रोमिनेंट डेमोक्रेसीज हैं वर्ल्ड के। अगर हम इस बात को, इस इक्वेशन को बदलेंगे, बिग डेमोक्रेसी, ओल्ड डेमोक्रेसी,
पावरफुल डेमोक्रेसी, वीकर डेमोक्रेसी, उसको छोड़िए. इंडिया एंड यूएस आर द टू मोस्ट प्रोमिनेंट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड. और इस बात का एहसास यूएस को भी हो रहा है कि जैसा भी हो, इंडिया अपने ही जैसा है. मेल्टिंग पॉट, डाइवर्सिटी, इन सब चीजों पे वो मिल रहे हैं. तो इस बात को एहसास करते हुए जो स्किज्म है, यहां तक कि पार्टी में भी स्किज्म हो गया है. अब लोग इस बात को मानने लगे हैं कि भाई इंडिया की ऑडिटीज जो है, हम जो ऑडिटी कहते हैं, उसके साथ हमें जीना पड़ेगा. अब वो बदलने वाले नहीं है. तो ये जो है, पेंटागन जो है अभी इंडिया के साथ है, स्टेट डिपार्टमेंट मानता है, लेकिन वो जो है अभी उनकी जो आदत है इरिटेशन कॉज करने की, वो लगी रही है. मेरा एक अनुरोध है भारतीयों से, खास करके मैं तो ये अनुरोध करूंगा, लक्ष्मी मित्तल, बिहार के अनिल अग्रवाल, उनसे मेरी एक बार मुलाकात हुई है यहाँ पे न्यूयॉर्क में, और अंबानी, अदानी, एक बार जरा मर्दानगी दिखाएं और ये कहें कि अगर सोरोस $1 बिलियन दे सकता है भारत को डुबाने के लिए और मोदी को हटाने के लिए, तो हम भारत को प्रोटेक्ट और डिफेंड करने के लिए हम भी $1 बिलियन लगाने वाले हैं. अरे ऐसा बोल के देखिए साहब, बुलंदी और भी छत जाएगी इस पे. आई होप दैट इंडियन CEOs and entrepreneurs recognize this fact. Just say one simple statement that we are where we are because of our performance and merit. हम अपना अधिकार से अधिकृत रूप में यहाँ पहुंचे हैं, किसी फेवर से नहीं, या कोटा और कास्ट बेसिस पे नहीं. इन सब चीजों का जो दारोमदार है, हमें बहुत से मुद्दों पे लड़ना है, अपने आप को प्रायोरिटी बना करके उस पे लगना है. तो यूएस डिपार्टमेंट, यूएस की बात करता हूं मैं, तो यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी है इंडिया के लिए. एट द सेम टाइम ऐसे भी लोग हैं जो जयशंकर को हटाना चाहते हैं, जो मोदी को बदलना चाहते हैं हिंदुत्व के नाम पे. तो ये सब तो खेल चलता रहेगा, लेकिन यूएस अभी डिवाइडेड है, यूक्रेन के कारण भी डिवाइडेड है. अब तो यहाँ पे रॉन पॉल ने आज वक्तव्य दिया कि वो जो है यूक्रेन की फंडिंग को अपोज करेंगे. सो बहुत सी चीजों में अमेरिका फंसा हुआ है. $33 ट्रिलियन की डेट ने इसको असहाय कर दिया है साहब. अमेरिका इज वरीड नेशन. अब प्रिंटिंग भी कितना करेंगे नोट का, वो भी इनको एहसास हो गया है कि अब बिना प्रिंट करके हम अपने आप को निकाल नहीं सकते हैं बाहर. वी हैव टू हैव अ मैन्युफैक्चरिंग बेस, अ ट्रेडिंग पार्टनर, जहां से कुछ काम काज हो. और इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट गिव्स देम दैट मार्केट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर चाइना. ये इस बात का एहसास अक्रॉस द बोर्ड हो गया है. लेकिन कहते हैं कि पुरानी मार्केट का करेंगे क्या जब मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगी तो. एग्जैक्टली दैट्स द होल पॉइंट. और सारे मैन्युफैक्चरर उनके बैठे हुए हैं चाइना में, और चाइना से इंडिया इंपोर्ट कर नहीं रहा. तो चाइना वाला जितना भी लेबल है उसको आजकल अनऑफिशियली जो है वो कस्टम में क्लियर ही नहीं होता है. आप करते रहो. तो रुचिर से वापस मैं पूछता हूँ, देखिए ये सारा झमेला जो था वो G20 में शुरू हुआ, और G20 बाय ऑल अकाउंट्स वाज अ फेयरली गुड सक्सेस फॉर इंडिया, फॉर मोदी. तो ये जो आपने देखा G20 में, तो जो अभी जो इंडिया जो पोजीशंस ले रहा है, जैसे टिट फॉर टैट एक्शंस आपने देखे, मैंने जो बताया था क्रोनोलॉजी, उसके जो हुआ है कि भारत ने उन्होंने एक डिप्लोमेट एक्सपेल किया, भारत ने वो तो टिट फॉर टैट तो वो तो होता ही है, वो तो कर दिया. साथ में भारत ने उनको बोला कि आप उतने ही डिप्लोमेट रखेंगे जितना इंडिया कनाडा में रखता है. तो उनके जो नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स वाज 3 times व्हाट इंडिया हैड इन कनाडा. तो नाउ दे आर इन द प्रोसेस ऑफ स्केलिंग डाउन. एक चीज़. दूसरा जो सबसे बड़ा लीवरेज इंडिया का है वो ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स दे शोर अप अ पार्ट ऑफ कैनेडियन इकोनॉमी. और अभी जो भारत ने जो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी जारी की है, वहाँ से वीज़ा देना बंद कर दिया है कनाडा से कैनेडियन नेशनल को, एक्सपेक्टिंग कि टर्डो बीइंग टर्डो ही विल रिएक्ट and he will stop giving visas to Indian nationals. और वो हो जाए तो भारत का काम बन जाएगा.
तो ये आप ज़रा देखें कि जो G20 में जो कंसेंसस अचीव किया गया, क्या वह भी एक प्रकार से सिग्नल है डीप स्टेट की तरफ से कि यस इट्स गुड टू गो विद इंडिया? Yes, because if you look at what Trudeau was saying in the immediate aftermath of the G20, and I hope my connection is okay because I think yeah. I had a little bit of trouble hearing you. Okay, great. He expressed great disappointment that he was not able to push his pet topics into the New Delhi Declaration, into the consensus that was formed. So he was The woke topics. apologizing to The woke domestic audience. topics. Yes, he was. Well, no, the Ukraine, and then the woke topics. He was the biggest cheerleader of Zelensky and the Ukrainian position at the G20, and expressed great disappointment that he was not able to push that through strongly enough. And I think to add some salt to the wound, because it was quite a climb down from the Bali Declaration last year, where they were the G20 were a bit more critical of Russia. In the New Delhi Declaration, Russia was not mentioned, and the Ukrainian. Yeah. You're losing your connection. You lost the connection. जी, विभूति जी. मैं we will wait for Ruchir to come back, but मैं आपने जो स्टूडेंट वाली जो बात कही थी ना, ये जो है मामला अभी जो है बड़ा टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि कनाडा अगर ने स्टूडेंट्स की वीज़ा को छोड़ दिया, नहीं दिया, बंद किया या कुछ मजाक किया उस तरह से, तो भारतीय स्टूडेंट्स के लिए समस्या हो जाएगी. कॉलेज ही नहीं है इंडिया में पढ़ने के लिए, तो ये भारत को भी एक मौका है. अभी वो कहते नहीं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में मौका जो गाना निकला था, ये भारत के लिए मौका है कि अपने एजुकेशनल सिस्टम्स को कैसे इम्प्रूव करें कि हमारे विद्यार्थी, क्वालिफाइड विद्यार्थी बाहर जाके उनको पढ़ने की जरूरत ना पड़े. हमारी भी इंटरनल सिस्टम्स को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. ये अवसर है और ये अवसर को भी भारत सरकार को देखना चाहिए. इतना तो हमें पता है कि भारतीय जो है, कनाडा हो, दुनिया में कहीं भी हो, भारतीयों का कंट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त है. और हम इस मामले को भी मानना पड़ेगा कि हम कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है. हम ना समस्या उठाते हैं, ना समस्या की पैदाइश करते हैं. हम तो एडजस्ट करके जीते हैं. इस बात की जो है उनको खलल होने लगी है अब. तो सोसाइटल लेवल पे एवरीबॉडी लव्स इंडियंस एट पर्सन टू पर्सन लेवल, बट वो जो होता है, जो स्टेट डिपार्टमेंट की जो प्रोपेगेंडा होती है एंटी हिंदुत्व को जो उन्होंने हवा बना के रखा हुआ है, इसको हमें खुद ही इसको डील करना पड़ेगा और कोई डील नहीं करेगा. तो जो नैरेटिव वॉर है वो अभी जो है हम सबों को करना है, एक एक व्यक्ति को करना है. जिस तरह से कनाडा पे जैसे कनाडा में पन्नू ने जाके बोला कि इंडियंस भागो, हिंदू भागो यहाँ से, नहीं तो उन पे अटैक करेंगे, टेम्पल को अटैक किया. हमारा कोई कोऑर्डिनेटेड अप्रोच नहीं है. हम सब अकेला चलो रे करके उसी में फंस जाते हैं. तो माय थिंग वुड बी दैट इंडिया का जो कल्चरल वॉर है वो हमें जीतना पड़ेगा. इस बात को हमें साबित करना पड़ेगा कि दिखाओ, सवाल पूछिए हम पूरे दुनिया की सरकार से, चाहे यूके हो, यूएस हो, कनाडा हो, जहां भी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आर इंडियंस अ प्रॉब्लम फॉर यू एनीवेयर. तो ये जो है सोशल प्रेशर जो हमको क्रिएट करना पड़ेगा सोशल मीडिया के थ्रू. गिव मी एन इंस्टेंस वेयर इंडियंस आर अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम. व्हाई आर यू आफ्टर दीज पीपल? तो कनाडा को तो अब तो नंगा हो गया है भारतीय, अब थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया के कारण तो ये तो मामला बिल्कुल सामने आ चुका है ना. अब तो कोई छुपा नहीं सकता इस बात को. खबरें इतनी तेज से चलती हैं कि 3 दिन वो क्यों रहे वहां इंडिया में एक्स्ट्रा, वो भी सब, उसके भी बहुत सारे दारोमदार निकल गए जो पहले कभी नहीं पता चलता. तो इस बात को लेते हुए हम कहेंगे कि इंडिया का जो वर्चस्व भी एस्टैब्लिश हुआ है, इसको सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. और इसमें जो है, गिव द मैन द क्रेडिट. प्राइम मिनिस्टर मोदी, द वे दे हैज इवॉल्व्ड द एंटायर साउथ कोऑपरेशन, इंडिया का जो स्टेटस बनाया है,
only the enemy of India will hate India, obviously, at both घर पे और घर से बाहर। एक बात मजे की इसमें और भी है कि जिस तरह से इंडियन इंटेलिजेंस रॉ वाली जो बात करते हैं, आप भी बहुत बढ़िया मजाक में चर्चा करते हैं इसके बारे में, रारा के बारे में। रा जो है इतना खतरनाक है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि यूएस सिटीजन है, उसको कनाडा गवर्नमेंट ने भारी सुरक्षा दे दी है, ऐसा सुना गया। तो मैं अभिजीत अपने मित्र अभिजीत अय्यर मित्रा की जो ट्वीट थी, मुझे पढ़ के बहुत हंसी आई, जो उसमें लिखा था कि अगर ये प्रूव हो गया कि भारत ने किया है तो हम मोदी जी के सारे गुनाह माफ कर देंगे। तो आज जो है आप देखिए, और गुरपतवंत सिंह पन्नू तक तो ठीक था, और वो दूसरा जो है वो सुक्खा और मारा चला गया। सुक्खा भी चला गया, सुक्खा भी चला गया। तो अब जब सुक्खा चला गया तो भाई ये लॉरेंस बिश्नोई किसी का सूडोनिम तो नहीं है। तो इसमें मजे की बात ये है संजय जी कि आज सडनली भारत का इंटेलिजेंस और जो भी है, हम कुछ कर सकते हैं बाहर। जो कहते हैं कि मोदी जी ने कहा था ना कि हम अंदर घुस के मारेंगे, वो साबित कर दिया। तो ये जो है भारत की जो नई छवि जो बाहर आ रही है, इसका बहुत लोगों को थोड़ा गर्व हो रहा है साहब, कि आज हम मोसाद, CIA, MI5, MI6 की तुलना में आ गए हैं। कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान घुस के मारा था, और ड्रोन से हम व्यक्तिगत रूप से लोगों को उड़ा देते हैं, कोई कुछ सवाल नहीं पूछता। कहाँ है ट्रूडो साहब पूछने के लिए, बिना प्रूफ किए हुए कि कौन था, हमारे एस्टिमेट में था, मार दिया। आज इंडिया ने किया है तो कौन सा बुरा काम किया है। इस बात की मुझे ज्यादा प्रसन्नता है, क्योंकि मैं अमेरिकन से सुनता हूं ना, उन लोग कहते हैं, इफ यू आर सो पिस्ड ऑफ विद पाकिस्तान, व्हाई द हेल डोंट यू ब्रेक रिलेशनशिप विद देम। आई मीन, यहाँ पे डिवोर्स सब तो बड़ी चीज है ना। डिवोर्स पाकिस्तान, why are you expecting us to declare Pakistan a terrorist nation when you yourself are not doing it, right? कश्मीरी हादसे के बाद जो चलती है कि people are asking US should declare that a genocide, but India itself did not declare Kashmir tragedy as a genocide. तो इस बात की हमें भी अब इन सब चीजों को मानना पड़ेगा कि हमें जो करना है वो हमें ही करना है, हमारी नैरेटिव हमें ही बनानी है, हमें ही अपनी बातों पे स्टैंड अप करना है। तो G20 की जो सफलता थी वो बहुत बड़ी सफलता है, इसमें कोई छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि उसमें मोदी जी ने एक बहुत बड़ी चीज ये की कि पूरे देश को उन्होंने इन्वॉल्व किया। जैसे कि जर्मनी के एम्बेसडर ने कहा कि फ्रॉम महाबलीपुरम टू नागपुर वी केम टू नो सो मेनी सिटीज इन दिस कंट्री। इट वाज नॉट अ दिल्ली का मामला कि दिल्ली में हो गया, इवेंट खत्म हो गया, आए लोग चले गए। ये सारे भारतवर्ष में पूरा इन्वॉल्वमेंट किया। तो वो लीडरशिप देखते हैं ना लोग, क्योंकि लीडरशिप का तो वही होता है ना, हर एक को मौका। एक कैप्टन सचिन तेंदुलकर अच्छे कैप्टन नहीं थे, हट गए। Okay, Ruchir is back. So Ruchir is back. Floor is all yours. Go back to Ruchir and ask him to complete what he was saying. The problem with this virtual screen is that it takes too much of bandwidth. Yes, exactly. That's what happened. So I think I experienced some overheating at my end. But so yeah, good to be back. At what point was I when we lost the connection? I thought we were the old men. Then I'll try to recall. Oh, I can help you. We were talking about Trudeau, also called as Trudeau, if that helps. You were talking, I think what you were talking about, the entire machination that is happening in the world with reference to Trudeau. I think what I had asked you about the context of G20 and how India had managed that so well, and probably as you were saying that Trudeau was very disappointed. Yes, he was disappointed and apologizing to audiences back home that he was not able to push the Ukrainian issue strongly enough into the G20 final New Delhi declaration. And in addition to all the other humiliations he faced, he was given the cold shoulder.
he thought his room at the hotel in New Delhi was bugged. He refused to take the presidential suite and wanted to choose his own room so that he wouldn't be spied upon by the evil and omnipotent and omniscient Indian intelligence agencies. And then his plane for 3 days because they probably thought that was full of bugs as well, or maybe a bomb. Your voice is breaking. I would encourage you to shut off your virtual screen. We don't mind seeing your background. Okay, I'll give that a try. That's yeah. Are you there? All right. I hope this is better. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. So can you hear me and see me well now? Yes. All right. Yeah. So then, so in addition to all of these humiliations, he was sort of already quite paranoid about what the Indian intelligence agencies had planned for him, whether it was to bug his room or to infiltrate his plane. He stayed 3 extra days with his plane on the tarmac at. The talk here is that actually he was carrying drugs. He again dropped out. I did not know Switzerland has set back. Switzerland is very, very backward, I guess. I mean, Swiss precision. Geneva is, I think, about 50 years behind India, I guess. भाई हमारे बिजनेस में तो बहुत आगे हैं वो बैंकिंग में. Swiss precision, Swiss precision is known around the world, right? We have direct evidence. So, चलिए अब हम I think we may start with questions. Yes, why not? We can do. Meanwhile, if he joins back, then we will ask him to complete. Yes. So, ये क्या है? Is there a backing of West allies to turn down Bharat? मेरे समझ में नहीं आया. Very general. DER not clear. DER not clear. DER is there. आजकल जो है ना वो youngsters में there is written like that only. We are they are not fastidious about spellings as we were. That's right. Abhi Nag, Pranam. Apart from Hindi and English, can any of you speak French? Well, I have done a course in spoken French, if that helps. So I can understand a bit of French, speak maybe haltingly, lekin unless one is in that environment, one would not be able to speak. If yes, then please issue a message on the right of self-determination of Quebec. Let me inform you. There is a free Quebec referendum going on. Please, all people from Quebec who can listen to me, आप सब लोग, all of you are encouraged to go to that referendum and vote whether you want to secede from Canada or you don't want to. So if you want to secede from Canada, you can go and vote in that referendum. Last I saw, there were about 1,200 votes and 93% had opted to secede. But I don't know how many of them were from Quebec. A lot of Indians are masquerading as. Quebec is really beautiful. They're totally French speaking. So, उनकी भी demand है वैसे. That's right. So we had started taking questions, Ruchir, while you were away. So आप चाहें तो आप you can complete your point. Welcome to civilization. Okay. So, I mean, we didn't realize Switzerland was so backward. It is in many ways. But at the G20 there were a series of
amusing moment, which led to him that to. plane was detained because it was suspected to be carrying drugs. Right. This is the rumor doing around in New Delhi. Yes, I heard that rumor. I also heard that Trudeau was paranoid that while the plane was on the tarmac, while he was attending meetings with his entourage, Indian intelligence agencies went and bugged the plane, or even worse, maybe put some Man is sort of crazy. case of Absolutely. exploding mangoes like we did with Ziaul Haq. So I think we need to be very proud of India now. the plane inside out to make sure there were no surprises on it. And this altered state of mind in which he was in led him to go back home, where he was greeted with all sorts of negative publicity. They were asking, why did you take your 15-year-old son with you? And why was he meeting random models at cafes in Delhi and influencers? They were asking about the housing crisis. They were asking about the indigenous rights movement, all sorts of difficult domestic political issues, which have led to him falling in popularity. His approval rating is only 30% or so, 35%. If the election were held this weekend, he would lose comprehensively. So what did he need? He needed some sort of win to present to his parliament, to his party, to his people, and he came up with this because it's easy to throw allegations. You don't need proof. As we've seen, the media swallows anything if you say that, oh, Western intelligence sources have said so. We've seen this in case of the WMD in Iraq. They've learned nothing from that. So why not go for it? It reminds me of the movie in the 90s called Wag the Dog, where in order to boost the ailing poll figures for the US president, they decide to create a war in the Balkans to get him reelected. So yeah, why not? He thought it would be a simple foreign policy win. They'd already laid the groundwork, saying India was like Iran and Russia, doing all sorts of interference in Canadian politics. But it's all projection. It's in fact India that's been complaining for a long time that Canada gives unwarranted policy interference in terms of the farm laws, in terms of the due process that we have for various under trials, who, despite receiving so many dossiers from India through official channels asking for the extradition of 20 to 25 wanted terrorism suspects and murderers, they refused to act. And before India could make a big deal out of this, because it was pretty clear from the Indian Ministry of Internal Affairs press release about the Trudeau-Modi meeting on the sidelines of the G20 that this was brought up privately from the Indian side. Before India could make it public, he needed to have control of the narrative. He's done so. And it's been a few days. He wasn't able to get the other G20 or the other Five Eye countries on board. He's starting to backtrack a little bit, but I don't think you'll ever get an apology from him. He didn't apologize to his own party for all his scandals, for all his U-turns. He's not going to apologize. You have to just let him be further embarrassed. And meanwhile, there was a huge demonstrations today in Ottawa, I believe. Yeah. Against his wokist policies. Okay, we continue with the questions. Dr. K. Chakrabarti. Dr. Jordan Peterson seems to be a big critic against Trudeau's woke and leftist policies. Sanjay, what's your view on Dr. Jordan? Also, is it a true majority Canadian Sikhs support the Khalistan referendum? The last point I can answer. I don't think so, because generally what happens is that the majority is silent in front of the rogues. These rogues are a minority. They even lost the election to the Saray Gurudwara, where all this scandal takes place. About Jordan Peterson, Vibhuti Ji.
Jordan Peterson has been a critic of woke and leftist things. That's why even Vivek Ramaswamy goes on his channel quite often, actually. So I have been trying to reach out to him to come on come on Jaipur Dialogue or Jaipur Dialogue USA. Sent him a couple of messages. Actually, I told one of Vivek Ramaswamy's friends that, hey, encourage him to come. Let's have a good dialogue on that. So whatever the point of view, difference of opinion is one thing. Having a discussion is more important. So let's do that. I'm reaching out to him, actually. Yeah. Okay, next. Praveen, SDG, not enough Sikhs are coming out in India or Canada making it clear they don't support Khalistan. Why? Because that's what the fact is. They don't support Khalistan. Khalistanis get no votes in the elections there, as you would have seen. The Khalistani parties or the separatist parties, they didn't even get 2% votes. Yes. Next. C2, it seems now the SJF or Canadian Sikhs engaged with Sikh leaders, including SGPC, to be vocal to create pressure on Government of India for dialogue with Canada. Well, they don't have any leverage. What will they do? We know SGPC itself nurtures all kind of separatist nonsense. And Jaipur Dialogues has been spearheading a campaign against those separatist ideas. The Max Sikhi or the Angrezi Sikhi, as we call it. Next. And the time for dialogue has long passed. There's been dialogue for 8 years on this with the Trudeau government, and the Canadian side has been the one that hasn't responded to anything. Okay. RP is saying, Ruchir, you are a brown sepoy. Why are brown sepoys? Why are, oh, sorry. Not you are. Why? English is a funny language. No, the problem is that these guys, they use all kind of abbreviations. Why are brown sepoy like Sagar Vivek so eager to save US? US society going down is good. Have you seen any Christians so eager to save India / Hinduism? Very good question. I love it. It reminds me of one of my favorite memes. It was made, I believe, by a Greek person during the elections in Turkey earlier this year. It said, "You support Erdogan because you think he's a good leader. I support Erdogan because I know he's a bad leader, and I want Turks to suffer." You went silent. You went silent again. I would say the same about Imran Khan. Yes, you think he's a good leader and you support him. I know he's a bad leader. So, yeah. Therefore, I do. Yes, correct. And for Sagar and Vivek, they are embedded in the US ecosystem. That's their life. They need to make a success of it. I see them as accelerationists. No one can stop the decline. You can just make it go faster. And with their unorthodox approach, it helps ignite a lot of minds. It helps move the discourse towards a new reality. Mahendra Acharya, किमर्थम भाषते लुंठकानाम शठानाम आंग्ल भाषया एव. भैया सभी में बात करनी पड़ती है. Don't be what is called a bigot. इंग्लिश के प्रति इतना असहिष्णु नहीं होना चाहिए आपको, महेंद्र जी. नेक्स्ट. Nomad 77. Namaste Sanjay sir, loved your podcast with ex-Muslim Sahil. Please do a similar podcast with Adam Seeker Urdu. Keep up the good work. Jai Hind. I don't think Adam Seeker Urdu can come in the physical form, and podcasts are done physically. The podcast that we do. Okay. Next. R. Pai. Sanatan Dharma has given birth to many adaptive and progressive ideas to be inclusive, but unfortunately, dharmic people on an individual level have become extremely selfish. What is the solution? Vibhuti Ji, you are the one who was indicted.
नहीं, बस मैंने तो कितनी बार यहाँ कहा हुआ है ना कि ये सेंचुरी सनातन को बिलोंग करता है और ये साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे सबसे बड़े एलाय हैं। अब जो है कुछ छुपा नहीं है। तो जैसे कि चर्चा होती है वसुधैव कुटुंबकम की, जिसकी चर्चा प्राइम मिनिस्टर ने 2 जगह दी थी, इस थीम का भी था यहाँ पे, 1 वर्ल्ड 1 फैमिली 1 फ्यूचर, like he did for International Solar Alliance, 1 sun 1 earth 1 grid। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है ये हमें ही करना पड़ेगा, हम वो कर नहीं रहे हैं। हम सेल्फिश इसलिए हो गए हैं क्योंकि जान बचाएं, इसी कारण से हम कमजोर हो गए। धर्मो रक्षति रक्षति का हम आधा सुनते हैं, आधा छोड़ जाते हैं। तो इन सब चीजों को हमें अपनी जागरूकता को आगे लाना है साहब। ये व्यक्ति विशेष को करना है, सामूहिक तरह से करना है, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, हम सबों की चर्चा करनी है। सो सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी तरफ से आप जो भी कर सकते हैं करिए। मैं अपना, जैसे मैं बताता हूं, I took a decision, I will not buy anything branded as halal. Finished. That's my decision. Everything from there starts a conversation. So एक डिसीजन लीजिए इस बात को। जैसे कि there was a video I saw कि किस तरह से हलाल इम्पोज किया गया है। कैन यू बिलीव इट? एयर इंडिया, आप किसी एयरलाइन को फ्लाई करते हैं तो आप देखेंगे आपको फूड की कितनी ऑप्शंस होती हैं, जैन, एशियन, 99 यार्ड्स ऑफ सो मेनी ऑप्शंस। आप उसमें लिखिए कि डोंट वांट हलाल, आई वांट झटका मीट। आप I want serve non-halal items. Unless and until you make, I'm a student of economics, you create a demand, you get a supply. You stay silent, you get served what is there. तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए every single individual has to work individually, collectively, using the framework that the society gives us. We are not good at that. So get active, that's all. At an individual level, whatever you can do, take that first step. Don't wait for government to do everything. Right? Okay. That's what it is. I can also add to this that it's important, in order to channel individual passions a certain way, to have institutions that reflect your faith. And when we say many people on the individual level have become extremely selfish, it also depends on where they are. If you look at the Buddhist Sinhalas in Sri Lanka, they are well organized. The Buddhists in Myanmar are well organized because they have their Buddhist Sangh, which is free of government interference and influence, which has full rights like any other religion. That is denied to us in India, and because of that, we don't have the same playing field as others. Right, you are right, and that's what the question is. कि अगर भारत में सेक्शन 25 to 30 एस्टैब्लिश करके हमें बिल्कुल निकम्मा कर दिया और बाकी लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो ये सवाल कौन पूछेगा? अगर हमने इस तरह से व्यवहार नहीं किया, हमने सवाल नहीं पूछे, तो सारे के सारे लोग हमें टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं कि छोड़ो, इनको जाने दो। That's what is happening. Let's move on. Dr. K. Chakrabarti, is it true in the past Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee supported anti-Hindu activities of Khalistanis and what's SGPC's present stand on this issue? Of course, it is 100% true. We have a whole playlist on this that you can have a look at. Just Google Puneet Sani. You will have plenty of his Puneet Sani, Jaipur Dialogues. Yeah, just watch that. Adam's fangirl, big admirer of you, sir. You are doing a great job for Indian society. Please do invite Adam Seeker on your channel. I have invited him so many times. Sridhar Nalla, thank you. Expat Indian, hi all. What is the real importance of Canada for India? I try to find out after all these issues, but unable to figure out so far. Also, can we just compare them to Pakistan in future? Well, figures. They export $460 million worth of goods to us, and we export $430 million worth of goods and services to them. That's about all. I think we export more people towards them. I think we subsidize their education, the education sector.
if 40% of students in Canadian universities are Indian citizens who are paying a much higher fee than domestic students, then their education system is being propped up by Indian students. And they might try to use this population as a hostage population, seeing that Ukraine did that recently. But I don't think that's going to fly in the same way. Next, Sridhar Nalla, is Jaipur Dialogue leading any campaign against today's illegal banning of string YouTube channel? We joined everybody else. Next. We are supporting, but as far as any special campaign is concerned, we are joining the campaigns which are already running. Meher, hello sir, do you think population control bill will ever be implemented? I don't want it implemented, sorry. I am not in its favor. Why do you require population control to be implemented when the population is going down by itself? Is the government waiting for the Hindu population to reach 50%? That's not a calculation which is proper. That's more of what I would call propaganda. That's never likely to happen. So that brings us to the end of today's discussion. Thank you. Before we end, viewers, on behalf of Jaipur Dialogue USA, I wanted to share with your audience, the audiences here today. Today there is another video that we have put up on Jaipur Dialogue USA YouTube channel. My conversation with Mr. Terry Milweski, the man who wrote the book Blood for Blood, 50 Years of Global Khalistan Story in Canada and everywhere else. Please do watch it because Terry has made some fantastic statements there. Very bold, very brave. And I would urge all the viewers to watch that. Link for USA channel is there in the description. And before we end, I remind you all of the Jaipur Dialogues Annual Summit 2023, 4th and 5th November. You can go to the description to find links for registration and for crowdfunding. So thank you very much, all the viewers. Thank you, Ruchir. Thank you, Vibhuti Ji. Thank you. Thank you. Jai Hind.